combating against whatever the psychological problem the patient is facing or will be facing in the future. Because, like, obviously, aesthetic also comes in, because you are going to lose a significant part of your body. And that will, especially because that I should have touched that also, especially in the married couples, that play a significant role, because the woman lose some interest in the sexual activities, and even the attraction for the male is also, become or decline a bit, because it's the shape is not what he was used to seeing. So these things play a role. So the role played by the psychologist is equally important, the role played by the oncologist. Thank you so much, sir. Sir, one last question. Sure. What are the potential long-term psychological effect of mastectomy or reconstruction surgery on the survivors? Yeah, first thing is, as I mentioned, PTSD, because that is there, will be there, because your body has gone through a significant change, a significant stress, a significant remodeling, I would say, because reconstruction surgery or breast implants is also, something which has changed the view, the shape, and your, mental status. So obviously, that also will be there, and because the thing which has to understand that now there is a problem, and the problem has to be dealt the way it should have been dealt. Whether it's a complete mastectomy, or it's just a piece of the breast is being removed. Obviously, there will be a significant change in the aesthetic of that person, of that female especially. And as I have already mentioned, if in the married couple, these are the problems they faces. So the psychologists try to control all these upcoming issues and the current issues both. I don't know whether I've answered this question. I don't know who is asking this question. Sir, there are participants on YouTube that are asking this question. Okay. So that's why. We have with us Dr. Sana Yasir. Ma'am, if you would like to comment or say a few words. Assalamu alaikum ji. I got the statistics and I was wondering, एक चीज जो हम psychologists से expect भी करते हैं और चाहते हैं कि वो collaborate करें. Pakistan Mental Health Coalition has been formed, and they are trying to not only come up with some ethical guidelines, but also later form a regulatory body, which is essential. You know that जिस तरह PMDC regulate करता है हम doctors को, उस तरह अभी फिलहाल in Pakistan we don't have a regulatory body for or a licensing body like that for mental health care providers, and there's many that are being produced. Even myself as a coach, I also think that we play a role in uplifting people, their moods, and we help them with their everyday issues. So जो डॉक्टर साहब ने अभी हाईलाइट किए हैं कुछ चीजें, they're very important. खाली सुने नहीं, इनसे ठीक है, this is not like a storytelling thing, but जो उन्होंने हाईलाइट किया ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें. हमें आपके क्वेश्चंस भी जो ऑडियंस ने किए हैं, लेकिन कुछ चीजों के जवाब आपको बहुत सारी पॉडकास्ट और बहुत सारी किताबों में भी मिल जाएंगे. बट डॉक्टर साहब ने कुछ चीजें जो हाईलाइट की हैं उन पे तवज्जो देना जरूरी है कि हम एज औरतें कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स अगर आपने नोटिस किया वो मैप, तो तरह तरह के कैंसर्स तो हैं, बट हमारे खित्ते में हमें मेरा ख्याल है डाइट को, फिजिकल एक्सरसाइज को,
और इमोशनल कनेक्शन पे गौर करना होगा। अगर आप नोटिस कीजिए कैंसर के ट्रिगरिंग फैक्टर्स को, तो डिप्रेशन एंड सैडनेस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, जो कि आमतौर से उस तरह से हाईलाइट नहीं होता, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट करते, but this is something to look into. Why are people more sad than before? The numbers are rising not only because people are more aware, but they're reporting also, they're getting tested also. So we have more numbers. Statistics बढ़े हैं, ठीक है, but I'm more focused on the solutions to be given. So yes, support is there, but एक शख्स जो बताना ही नहीं चाहता, जिसको ये खौफ है कि मैं नहीं बताना चाहती, वो कैसे आगे स्टेप फॉरवर्ड करे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनको इतना सपोर्ट और इनका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, न सिर्फ अपने स्पाउस पे बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स पे, इन लॉज पे, कि वो उंगली नहीं उठाएंगे और उनको इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगे बिकॉज ये मैंने होते देखा है, एंड it's not good. But thank you for allowing me to give this input. Yes, can I say something, Ujala? Sure, sir, sure. Thank you so much, Dr. Saiba, for this comment. And as you have said, like first of all, we have to know the problem. If I know the cause of the pain, then I can address the cause of the pain, because just taking the pain medication probably will not going to solve, but maybe solve for a little while, but the cause will going to remain over there. तो आपकी इस बात पे याद आई, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, वो जुम्मे में यहाँ पर एक साहब आए खुतबा देने के लिए, और उन्होंने बात शुरू की कि जी मुसलमानों में जो ना वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते। दैट वाज हिज मेन फोकस ऑफ दैट खुतबा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप सवाल जवाब अगर you start doing, that may going to end up in a conflict, which will not going to solve, because he has made up his mind, and he's saying that the Canadians have there are 25% Canadian who has got the psychological problems. तो अब उनको ये भी समझ में नहीं आया कि you are also a Canadian citizen and you are also among that 25%, but what he was trying to say that we don't have the psychological problem because we are Muslim. So anyway, बात खत्म तो नहीं, उनकी तरफ से तो खत्म हो गई, लेकिन I was just boiling up during the whole session. So I said, okay, let's go to Google, Professor Google, and find out something about this statistics, if we have some statistics, because we don't have even in Pakistan also. I don't think that the full statistics is available, that how many people are suffering from these different, because depression, anxiety it's quite common, whatever the problem you guys are facing over there. तो जब मैंने सर्च किया तो पता ही चला कि एक साहब हैं अबू बकर अल राजी। बहुत सारों ने शायद आप लोगों ने नाम सुना हो या ना सुना हो। अब ये बात है कोई 1000 ईयर पुरानी, ईरान में हुआ करते थे, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज डेवलप्ड द प्रोटोकॉल हाउ टू डायग्नोज डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलरिज्म। अच्छा, इनकी पेपर कैसे आया सामने, इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग। एक खातून है, वो पीएचडी कर रही थी, अब तो उन्होंने कर ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, वो पीएचडी कर रही थी, एंड she was an Arab woman, so somehow she come across some of the scripts written by this Dr. Abu Bakr al-Razi. तो उन्होंने जब उनको पढ़ा तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि what the Harvard manual is saying, this man has already formulated these protocols 1000 years back. So she showed it to her professor, and he said, I can't read Arabic. She said, I can read Arabic, and this is what is mentioned over here. So what they did, they published the article on this gentleman, Abu Bakr al-Razi, and that article was published in Archives of Psychology of Harvard, which is the very prestigious journal. So the reason I'm sharing this story, because you have brought up a point, Dr. Sana, that we have to understand and we should know the problem, then we will be able to come up with the solution. If we don't understand the problem,
then there won't be any solution. Thank you. Thank you so much, sir. You have a point, and now we will move on to our next journey of learning with Dr. Sana Yasir. Dr. Sana Yasir is a trans-friendly physician with a special interest in intersex and transgender person healthcare. She is a neuro-encoding specialist, a well-being master coach, and voice-over artist. Besides raising awareness about gender variant and bodily diverse people, she caters to the physical, mental, and emotional health of all individuals. Dr. Sana, the floor is all yours. Thank you so much, Ji. I've been, I don't have a presentation, but I would love to start with, yesterday we were talking about stories when Dr. Shesha Sayed started. Yes. And I thought that मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्या लाऊं, because the topic that I chose and I want to convey to everybody, whoever is watching, that we can thrive with boundaries. एक चीज जो से नहीं सिखाई जाती या हम हैरान होते हैं, बड़े होने के बाद बॉडी ऑटोनॉमी की बात होती है या बाउंड्री की बात होती है तो ये लव्स एलिनेटेड होते हैं. So I want to start very simple. Most of you don't know me with this brief introduction. That's what I do professionally, but as a person, I'm a very open person. When you see me, I am like this, and my intention and my purpose in life are very clear to me, alhamdulillah. So let me start with sharing a little story with you. It is not a sob story. It's me, but it might sound familiar to some of you out there. Back in the day, I've been married for almost 17 years. जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी. So back in the day, when I got married, I was the ultimate yes person because it was a love marriage, and I wanted to prove to everybody that I can take on any chore. I wasn't practicing as a doctor. I was in home trying to run the household. And because, sometimes that is the task you're given, like, okay, fine, you're a doctor, but how good are you with the home management? So I would take on every chore. I would do everything with a big smile on my face, and I would keep on saying yes, which was adding to, a lot of responsibilities because I live in a joint system. I still do. And in my head, I used to say that, I can do this. I was not only a yes person to others, but I was also a yes person to myself. Like I wanted to be that superwoman. Like I can do it all if I try a little harder, if I push myself a little harder. So that obviously I loved the praise that I got. I loved the appreciation also. Even when people got used to it with time, the appreciation went down, the acknowledgement went down, but I kept on doing more and more. And this whirlwind of people pleasing and self-neglect, because I was neglecting myself while I was serving others too much. It led me to this dark path in the sense that after the second baby, I didn't care much about my own diet and all. I faced postpartum depression, which was then prolonged. And कुछ symptoms होते हैं उसके, वो symptoms अपनी जगह, but मैंने जैसे बताया, I had a love marriage, and the whole idea was that this loving person that I'm getting married to will always be there, will always be supportive. I had too many expectations, and those expectations were unsaid. I was not conveying, and when I tried to convey, the agitation and the frustration was coming out. And it was unfair on my part that I was expecting everything to be fixed by just one person. So when this one person obviously was not able to cater to my high expectations, there was resentment creeping in. Self-care was not there.
And the satisfaction, overall life satisfaction, it wasn't there. And I didn't know how to phrase it. I didn't know what was going on. I was not self-aware back then. The turning point came when my loving husband noticed that my frustration and I'm becoming more and more agitated. I was screaming at my children also. And he nudged me into saying that, hey, isn't it about time that we take professional help? And so it was a wake-up call for me, and I couldn't agree more. I wanted it. It came out in a negative way, but I took it positively. I said, yes, I think I do need help, and you're responsible for me, so you take me. And I don't want anyone else knowing about this because I don't know what's wrong. So you can understand that it wasn't just resentment that was making me say it. It was also a bit of shame, like, I'm a doctor. What's happening? Why am I unable to manage this? Therapy was my first step. I just took a few sessions, and the lady was very kind in saying that you're very sorted in the head. You don't need these sessions. I will speak to your husband, and maybe you guys need to, be each other's vent. It didn't make much sense to me because in my head, my problem was not sorted. I thanked her, and on my way back, I was like, I'm back to zero. Even after spending with a therapist, I am back to zero. And I'm unhappy. I used to think that love is sacrifice. I sacrificed. I'm still not happy. I'm still not feeling loved. I had so much to say, so much. Fast forward to today. I've not only transformed my own life, but I in the last 5.5 years, 6 years almost, I've helped other people on their journey to self-discovery, to fulfillment, to creating those healthy, beautiful boundaries that make them aware of how to thrive, not just survive. Now, let me highlight a few things. I've written down a few things. The disadvantages I had of not having boundaries. There was definitely burnout and overwhelm. You've heard these words before, maybe you've heard them before. But please let me say that without boundaries, people often find themselves overcommitting, under-delivering, like spreading themselves too thin. And when you spread yourselves too thin, it leads to burnout. It leads to exhaustion, mental as well as physical. And there is a constant feeling of overwhelm. You're not in a good headspace. Another thing is resentment, I mentioned. Continuous self-sacrifice, that breeds resentment towards others, because I could see, are these my loved ones who are not caring about me? Those kind of thoughts creep in. And, it then translates to, because your thought make your feelings, and your feelings make your emotions. So these kind of thoughts are self-sabotaging because they make you feel negative emotions that you can harbor for a very long time, years. And when you keep on harboring these negative emotions, you become negatively charged. You attract everything negative. Things go wrong. Law of attraction plays its role. Okay. Lack of self-care is something that I also mentioned. Do you know, I've both kids, I've breastfed. Okay, I was very mindful. Mothering was like on top of my list. So breastfed 2.5 years my son, 2 years my daughter, and इतना ही difference है उनकी, उनके पैदाइश में वक्फा भी है. So what was I doing? My vitamin D level was down to 8. And for those who understand that vitamin D needs to be above 30, हमारे यहाँ की जो पाकिस्तानी laboratory की gauge है. So I found that out much later, that, I am depleting my resources. So it's not just a physical thing anymore. It's having a mental impact also.
Did I have difficulty saying no? Of course. I was so used to saying yes. No never came to me. I used to go quiet, or मेरे चेहरे पे आने लगता था कि मैं कैसे फील कर रही हूँ, like I'll be miserable and say अच्छा चलें देखते हैं कैसे करते हैं इसे, अच्छा चलें ये भी हो जाएगा, हाँ जी बस देखते हैं कैसे करते हैं, because you know a certain part of my training, my upbringing was that I can do it all. I just need to put my mind to it. I do have a limitless mindset. I still do. But now I prioritize my well-being. Now before even Sadaf asked me that on a Sunday, 10 o'clock in the morning, will you be able to come to this conference? And I said, sure, because this is more meaningful to me. I would love to do it passionately, because I know that this aligns with my purpose in life. So here I am telling you that don't overcommit. And if you don't want to use the word no, there are other ways. I teach people how to create boundaries. Okay. Something that led to all this was friction in the relationships. And as a relationship coach, I teach people boundaries are important, because without them, relationships can become strained. You don't know how to communicate effectively. And despite being surrounded by people, you can feel lonely. Not a good feeling when you have your loved ones around you and you still feel alone. And you just spread yourself thin, fulfilling their needs, but you don't focus on your own needs. That also takes you towards low self-esteem. If you hear my podcasts, some of them where I'm talking about, my own mental health, I'm very open about mentioning that I felt like a doormat. For years, I was a very popular kid in school, very popular girl in my college, university as well. And obviously, I was trying to, also with my in-laws and my home in the joint system, I was trying to be helpful to everybody, but at what cost? I had not calculated the cost because I was not a self-aware person back then. So, generally individuals may start to feel that their needs and desires are less important, leading to a diminished sense of self-worth. I don't know if you can relate with this, but I'm putting this out there because इन चीजों के लिए ना गोलियां नहीं मिलती. इन चीजों के लिए अगर थेरेपी में पॉइंट आउट हो जाए, थोड़ी सी मदद हो जाए, वो भी लॉन्ग टर्म होती है. When I got to know from my therapist that I will need at least 300 sessions with her, I was like, shit, do I have that much time? Am I going to commit 300 sessions? I was like, no, I need something faster. My husband is not going to wait 300 sessions for me to get better. My children, how will I parent? What will happen to my parenting? My husband used to say, you've become a fire-breathing dragon. Now, he used to say it in good humor, but imagine somebody with so low self-esteem at that time. मुझे तो लगता था अल्लाह मेरे बच्चे मुझे ऐसे ही याद करेंगे कि हमारी माँ क्या थी, ड्रैगन थी, गुस्सा करती थी, चीखती चिल्लाती थी. That's not what I want. If I die today, I don't want to leave that memory with them. So I'm going to leave you with some reasons to establish healthy boundaries. Please consider these. Some of you might be struggling silently, and I totally understand that. So if you have a pen and paper, go ahead and write this down. The biggest reason for establishing healthy boundaries is self-preservation. Setting boundaries is an act of self-preservation. It ensures that your physical, emotional, and mental well-being are safeguarded. Respect. Boundaries communicate self-respect and require others to respect your needs and limits. They foster healthier and more respectable relationships. Your better half will understand, your significant and other will understand that, now this person is going towards burnout. But if you don't voice it, they will not. Voicing it doesn't mean आप छोड़ मचा दें, मार्चे निकाल दें. अरे आप दिल की बात करें दिल से.
आप वो अल्फाज इस्तेमाल करें. वल्नरेबल होना मुश्किल नहीं है. वल्नरेबल होने में विक्टिम नहीं होना. वल्नरेबल होने में क्लैरिटी चाहिए. Boundaries provide clarity for both you and others. Boundaries tell you what are the do's with me, what are the don'ts with me. They help define your expectations and what you're comfortable with, and it reduces misunderstandings. कितने लोग हैं जो misunderstandings की नजर हो जाती है उनकी relationship. It also another good reason is empowerment. Establishing boundaries empowers you. You take the remote back in your hands. You control your life. Now imagine if you're sitting in a bus, that's your life, and there is another driver and you don't know, you're at their mercy. Boundaries empower you enough that you become the driver of your bus. It allows you to make choices that align with your purpose in life, goals in life, values in life. People who are self-aware know what their purpose in life is, know what their goals are. They create a beautiful life for themselves and their loved ones. Boundaries also improve mental health. They contribute to improve mental health because when you have boundaries, you have less stress on you. When you have boundaries, you are less overwhelmed. So overwhelming thoughts nahi hote, so anxiety bhi kam hoti hai. And another thing is balance. Boundaries help create a balance in life between how much I'm going to give and how much I'm going to take. Not taking in the sense that, oh, ab meri baari hai, mujhe do, but taking in the sense that you re-energize yourself because you cannot give from an empty cup. ये बातें सुनने में या पढ़ने में किताबों में अच्छी लगती हैं, but मैंने ये practically करके देखा है. And I invite you to, try to strike a balance and have a fulfilling life. Something that stood out most important, and this will help you not just in your personal but professional life as well, is effective communication. I'm not talking about open communication. I am saying make your communication effective. Setting boundaries encourages open and honest communication. बोलते हैं ना सच कड़वा लगता है, तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कड़वी वाली नहीं. ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में बड़ी इंसाइट्स हैं भाई. अगले बंदे की लैंग्वेज प्रेफरेंसेस क्या हैं. लेट्स टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो. अगर आपने ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ अगर आपके पास आए या आप you're aware कि उनकी कोई तू मैं हो रही है और उसमें ही हो रहा है कि जी आप तो मेरी बात समझते ही नहीं है, और वो कह रहे तुम मेरी बात सुनती कब हो. ये दोनों अलग लैंग्वेज सिस्टम पे इनका दिमाग चल रहा है. जो जो समझ की बात कर रही हैं उनकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस अलग हैं, और जो सुनने की बात कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस अलग हैं. ये इस बारे में अवेयर होना बड़ा जरूरी है. एक छोटे के साथ खत्म करूंगी कि my husband and I, we give each other time in the night and we have our heart to hearts and how was your day type conversations after we've said bye bye to the kids. 10:30 p.m. onwards, it's our time. Me time होता है ना जिस तरह, उस time it's our time. It's essential for our our thriving relationship. So while doing that, I am more of a visual person. I like to see the interaction happening. I observe things, I notice things. So my language patterns are like that. Those words I use a lot. And my husband happens to be an more auditory preferring person. He's a voiceover artist, and he picks on people's tones, and he picks melody, more auditory. So, when you ask him something, he's like, sounds like a plan. Or he'd say, yeah, that name rings a bell. So his word preferences, his sentence structures also show that he's auditory. So there was a song जो कि किसका था, एक बड़ा अच्छा सा गाना था. एक हमारे पुराने सिंगर का नाम भूल रही हूँ, बट उनका गाना आमतौर से ना गजल वगैरह या उनके गाने थोड़े से ना मुझे डिप्रेसिंग लगते हैं, वर्ड्स की चॉइस भी और उनके म्यूजिक भी. तो मैं बाय चॉइस ना पिछले 8 साल से डिप्रेसिंग या
सैड सॉन्ग्स बाय चॉइस नहीं सुनते, क्योंकि साइकोलॉजिकली होता है कि व्हेन यू आर फीलिंग अपसेट यू लुक फॉर दोज फ्रीक्वेंसीज. Okay, so people will indulge in, unconsciously say they will indulge in, they will pick out a song list for sad songs. They will have a separate genre for how they're feeling. Okay, so while our discussion, it was a kind of a wow moment where I said, you know why I stop you from listening to that song? Because my focus is on the lyrics. Because when I hear that person, I see his sad face and I see the lyrics, and he's like, oh, I never paid attention to the lyrics, the melody was so beautiful. So something now that this discussion helped me with was, I don't have to thopify, I don't have to assert that he not listen to that song because he's not even paying attention to the lyrics or the sadness in the song. For him, the melody is beautiful, and it's a frequency, sound frequency he can relate with. And so there is no more friction about the song choices. We watch same stuff on TV, and we prefer listening to the same songs. And if at all I don't want to listen to what he's putting on, then I understand that he enjoys it, and I respect that. So mutual respect comes with effective communication. With that, thank you so much for giving me this platform to talk and connect with you guys. I help people with their relationships, creating healthier bonds, and with boundaries, all of you can thrive. Thank you. Thank you so much, Dr. Sana. मेरे खुद कुछ सवाल आते हैं, लेकिन उससे पहले there are few questions in the chat section. Fiza is sort of asking or commenting that we find it challenging to set boundaries that lead to constant stress and burnout. I don't think it is a question. I think she is trying to say. She's absolutely right. Yes. She's absolutely right. We find it difficult because we were never trained since our childhood. We were always told to do, take action, but Yes. we were never taught to say no, because no seemed to be disrespectful. And Ramsha is asking that sometimes small things make us anxious, like it give you more than usual anxiety. What could be the possible causes for it? The simplest and the fixable cause is overthinking. अगर तुम्हारे दिमाग को तुम्हें अच्छी तरह इस्तेमाल करना ही है, और अगर तुम्हें अल्लाह मियां ने इतना अच्छा दिमाग दे दिया है कि तुम बार बार सोच रही हो, अच्छा सोच लो, पॉजिटिव सोच लो. पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि टॉक्सिक हो जाए. पॉजिटिव का मतलब ये अपने लिए चॉइस क्रिएट करो, देखो कि क्यों, किस बारे में स्पेसिफिक हो जाओ, क्या चीज एंजाइटी देगी. whatever thing, whatever topic you will overthink about, anxiety कम इंटेंसिटी की हो तो आपको पुश करती है to take action. So anxiety itself is not bad. The intensity is something you need to manage. And मेरा जो सवाल है वो ये है कि हमारे घरों में या हमारे माशरे में जो आपने बात बोली थी ना, हाँ कहने की, हमें आदत होती है हर चीज पे यस कहने की, तो वो आदत नहीं होती, आई गेस कि हमारा बिल्डअप ऐसा हुआ होता है. मतलब हमें कभी नो कहना कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होता, या हमें इजाजत ही नहीं दी होती है कि हम नो कह सकें, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है. ठीक है ना. तो व्हेन वी आर एट अ स्टेज के अब हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे, मतलब मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारी सिचुएशंस में मैं कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हूँ कि मतलब मैं इस पे हाँ भी हाँ बोल रही होती हूँ, लेकिन मैं वो करना भी नहीं चाह रही होती, क्योंकि वो no मेरे, यस, difficult. बिकॉज सेइंग नो इज डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो मैंने मतलब बचपन से मुझे इस तरह की अपब्रिंगिंग मिली है. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हर लड़की के साथ है. तो जो आपने बोला था ना कि अपनी ड्राइवर वाली सीट हमें खुद संभालनी होगी, तो वो ड्राइवर वाली सीट के लिए वो स्टीयरिंग किस तरह पकड़ा जाए, मतलब किस तरह स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? So start हमेशा सेल्फ अवेयरनेस से करते हैं.
ठीक है, सबसे पहले अपने आप को समझो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी. If you will have that feeling coming if you don't want to do something. सिर्फ हमें वॉइस करना नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है ओ अगर हमने अभी नो किया तो हम किसी को या तो डिसरिस्पेक्ट कर जाएंगे या उनका आगे से मुंह बन जाएगा और हम पीपल प्लीजिंग में फंस जाएंगे. एग्जैक्टली. सो सबसे पहले अपने आप को समझो, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है. बातें करती हो ना तो कन्वे कर दो. मैंने इतनी चीजें, मैंने कितनी आसानी से आज बैठ के यहाँ पर अपने घर की, अपने बारे में इतनी वल्नरेबल बातें शेयर की है. मैं पहले नहीं कर पाती थी. मैंने पहले अपने आप को समझा, आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. मैं महफिल में जान बन सकती हूँ. आप मुझे बोले, मैं मतलब यू नो आई कैन, I know that I've developed an aura. I have my presence and it humbles me because गुरूर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है. ठीक है, बट what what was my journey? बहुत मेहनत, everyday effort, knowing आज मैंने क्या सीखा, मेरे आज एक्सपीरियंस कैसा था, was it a productive day, what made it productive, what can I do better the next day. और इसमें खाली प्रोफेशनली बात नहीं मैं कर रही, मेरा इंटरेक्शन मेरे मियाँ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के सर्वेंट के साथ, हर हर एक इंसान जिसको मैं आज मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, जो मेरी आवाज सुन सकता है, जो मुझे देख सकता है, जिससे मैं महसूस करा सकती हूँ कुछ. हाउ एम आई इम्पैक्टिंग देम? ये सवाल तो मेरे लिए है ना. तो जब तक मुझे इसका जवाब नहीं पता होगा मैं आगे कैसे चलूंगी. So the first step you asked is self-awareness. There's a lot of people who struggle with self-awareness. You ask them, हाँ जी, how's life? And they'll be like, Allah का शुक्र है, so है, या they have very, fine, okay type जवाब. ठीक है, same old. How many people you will find who will say that they're aligned with their purpose or they know their purpose? They've never been on a purpose quest. हम क्या कर रहे हैं, हम फंसे हुए इन चीजों में कि जी टेबल पे खाना पहुंचाने, आज का दिन कैसे गुजरेगा. सम पीपल नीड टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम. देखो, जो रिकवरिंग एंजाइटी से रिकवर कर रहे होते हैं या डिप्रेशन से रिकवर कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनका पेस, उनकी रिकवरी, उनकी हीलिंग बहुत मैटर करता है. और उस वक्त उनके लव्ड वंस को स्लो डाउन करना जरूरी है. बिकॉज यू सी, लाइक आई गिव यू माई एग्जाम्पल, इफ आई एम ग्रोइंग एट अ सर्टेन पेस, I don't want to grow apart from my loved ones. I want to grow together. But at the same time, I need to allow them to grow at their own pace. उनकी understanding को मैं monitor या control नहीं कर सकती. मैं help कर सकती. I can make things faster for them. Hey, I tried this. This really worked for me. Can you also try this? Plus, voice करना सीखो. I statements use करना जरूरी है. When you did this, I felt really good. Instead of highlighting मुझे क्या चीज तकलीफ दे गई, start highlighting मुझे क्या अच्छा लगा, ताकि वो ज्यादा हो, अगले की भी अवेयरनेस में आ जाएगा. I hope that was helpful. Yes, that was. And yes मैम, मैं आपसे ही बोलने वाली थी और सर अजीज से कि आप लोग प्लीज कमेंट दें अपने, और कुछ कहना चाहते हैं तो. Such a humble and such a helpful session. Dr. Sana, I have two questions for my students as well who are actually listening to all this conversation. One, Farah actually wrote about and asked about कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स या स्ट्रेसर्स होते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज हम नो नहीं कह रहे होते या हम बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, और जो एक्सपेक्टेड होता है रिलेशनशिप्स में हमसे, वो शायद हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे रहे होते हैं. तो वो स्ट्रेसर्स हमारे अपने लोग भी होते हैं, हमारी फैमिली भी होती है, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, और वो कट ऑफ नहीं करते. हम कट ऑफ नहीं करते, बल्कि हम उनके साथ ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी स्टार्टेड सेइंग नो और व्हेन वी स्टार्ट सेटिंग बाउंड्रीज, तो होता यह है कि वो बैटल जो हम अपने अंदर लड़ रहे हैं और वो बैटल जो हम अपने आप से लड़ रहे हैं, उसके साथ कुछ और छोटी 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 मजीद बैटल्स स्टार्ट हो जाती हैं,
Because ही you है। are saying no, because you are setting boundaries, so people are not ready to cooperate. उनको आप डिस्टर्ब नहीं नजर आ रहे होते, उनको ये नजर आ रहा होता है कि बाउंड्री सेट हो रही है भाई, या नो हो रहा है, और ये वो बिल्कुल चीज सही। नहीं हो रही जो कि ये करती है या करता है। तो फरा ने भी जो अभी सवाल किया वो मैं उसको उसी तरह से ट्रांसलेट कर रही हूँ कि अगर आपको उन्हीं स्ट्रेसर्स के साथ रहना है, आप उन्हीं से थोड़ा अपने आप को जो है वो रिकवर कर रहे हैं, और वो ही लोग बैटल और मजीद स्टार्ट कर देंगे, तो फिर यहाँ आप इन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो फिर स्टार्ट करना ही नहीं चाहेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन, या वो छोड़ देते हैं बीच में, हाँ, उसका क्या हल है? सदफ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे केसेस हैं। एफर्ट 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 रिक्वायर्ड है ना। सो हम्म। कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। हम्म। अगर आप वही पैटर्न्स आपको सूट कर रहे हैं, आप उसी में स्ट्रेस के साथ सरवाइव करना चाहते हो, तो इट्स अ चॉइस। फिर आप सरवाइव करोगे, आप थ्राइव नहीं करोगे। विद बाउंड्रीज यू थ्राइव, यू डोंट जस्ट सर्वाइव। ऐसे समझिए जैसे बाउंड्री आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। बाउंड्री इज अ गिफ्ट यू गिव योरसेल्फ। ट्राई डूइंग दिस टुडे, and this is for your students, Sadaf. Make a set of 10 rules. Those 10 rules will be for yourself, and those 10 rules will involve showing up for yourself. How you will make those rules is simple statement: I will. It will begin with I will. So if I had to give you an example, let me say this: I will, because when I was setting boundaries ना, तो मैंने अपने घर में भी अप्लाई किया with my nieces also. ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ कोई रिफ्ट्स हो। तो the boundary I made for myself was, if one of the children comes to me for advice, knowing what I do, if they come to me for advice, I will ask them if they have their mother's permission to ask me. That's a boundary. That's what a boundary sounds like. It's a boundary for me, because then I will not trespass. I will not, take over the authority the mother has over them. Me being older, I get but it doesn't mean that I undermine a mother. So make a set of 10 rules like this for yourself. I will make an hourly calendar and put the expected time to finish a task in front of it, so that I don't have to overthink about it all day. I will do this in writing. That is what a boundary should sound like. I will call up my friend, or I will call up my whosoever at this time, so that आपके अपने schedule में भी आ जाए, आपका एक check box भी लग जाएगा once you've made that call, and it will be done. You will unconsciously get a sense of achievement also, that I was able to achieve this. These are certain tips and tricks. आज सिर्फ 10 rules बना लो ऐसे, जिससे तुम्हें नो नहीं कहना है, बट तुम्हें कंसिडर करना है अपनी वेलबींग। स्ट्रेस कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे मैं मिली और वो कहे स्ट्रेस नहीं है दुनिया में। मेरे लिए जो आज स्ट्रेसफुल बात है वो ये है कि मुझे अपनी टोन मैनेज करनी होती है अपने मियाँ के साथ, क्योंकि हम दोनों में सिर्फ 3 months का फर्क है। एंड फॉर मी it's very difficult to understand when he wants me as a friend and when he wants me as a wife. So when I'm a friend, I can be brutally honest, and I'm like, what the hell, why did you do this? And it's a very thin line for me, like mera struggle hai ye, theek hai? It's an everyday struggle, and I teach people relationships, okay? So just recognizing is what will lead you to working on something. So first recognize stress क्या दे रहा है, फिर उस stressor को कम करने के लिए boundary बनाओ। कैसे बनाओगे? I've told you, it will be an I will statement. ठीक है? I also have Thrive with Boundaries, मैंने मास्टर क्लास किया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग पढ़ी है, चाहिए तो ले लेना। अच्छा ठीक है, but understand this was a beautiful question, Sadaf. Thank you for putting this forth, and I hope जो ये यूज करेगा, I will want your feedback.
Now, accountability would be that since I've given you this, okay, I've told you how to make it. Those who are listening, 10 rules for themselves, which will be their boundaries. I hope this is helpful for you guys. Thank you. Sir Aziz, if you would want to say something. Sure, why not? Especially वो जो नो वाली बात थी ना, उस पे ये कि बीवी को नो कहना सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। और वहां से ताना ये सुनने को मिलता है, हाँ बेटियों को तो ना नहीं बोलते, मुझे ना बोल देते हैं। But I've got 3 daughters, so obviously माशाल्लाह। उनका जरा ज्यादा वो होता है। Anyway, अभी stressors की बात, Farah, which you have mentioned, I would just like to share a stressor that gives me a lot of anxiety and stress, and that is punctuality. And especially मेरा मसला ये है कि अगर किसी ने 6 बजे बुलाया तो I'll be there at their doorstep step at 6 p.m. That's it, done. तो ये एक मेरा बहुत बड़ा, और it's been going on for quite some time. और फिर anyway सबको घर में पता है कि वो जो है ना बाबा जो है is very punctual and he wants to do everything in a punctual manner. अभी भी ये कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई तो मेरा ख्याल है मैं कोई 1 घंटे पहले से जो है was trying to log in and see if I can get in. So these are some of the stressors which I'm actually living. Like there are obviously there are many more, but this is something which is a constant stressor that I am a डॉक्टर punctual साहब, person. अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटे होते से आपने ये सुना ना, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिलीफ सिस्टम में। माय बाबा वाज लाइक दैट टू। मैं कल भी एक शादी में 7:30 बजे पहुंची थी। सो अपेरेंटली माय हस्बैंड इज लाइक दैट टू। हमें पंक्चुअल होना तो अच्छा लगता है, बट जब आप इसको स्ट्रेसर कहते हैं तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि क्या चीज है जो आपको स्ट्रेस होने के बावजूद पंक्चुअल रखे हुए? ये आपने अच्छा कहा, इसलिए कि ये जो आदत जो मुझे पड़ी थी, ये हमारी दादी की उनका वो था उसूल कि अच्छा वो तो खैर जरा अच्छा दौर था। अब आप, मुझे नहीं मालूम कि आप 7:30 बजे पहुंची तो वहाँ पे चेयर्स भी लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, आप या अकेले थे आप लोग। लेकिन वो अच्छा जमाना था, कम से कम जो वो होते थे, होस्ट होते थे, वो तो होस्ट तो होते थे। लेकिन ये कि ये एक आदत जो बचपन से सीखी है और पड़ी हुई है, इसलिए कि वो अने खासी पढ़ी लिखी खातून थी। और वो पहला काम ये होता था, वो जब किसी के यहाँ से दावत आती थी तो पहला सवाल ये होता था कि कितने बजे की दावत है। अब जो भी उसके ऊपर टाइम है, इट्स मीन्स के नाउ दादी नोज दैट टाइम कि दिस इज द टाइम दे हैव इनवाइटेड अस, एवरीबडी इज रेडी बाय दैट टाइम फॉर लीविंग। अब अच्छा जमाना था, इतना ट्रैफिक भी नहीं था वगैरह वगैरह, तो ये कि हम वक्त पे पहुंच जाया करते थे। This is what I have learned from her. So that is keeping me, and I have given this example to so many people. Even my wife knows that one of the reason I'm punctual is because I have been as the eldest grandchild in the family. So I have been brought up by many people along with my father, my uncles, and my aunts, and my grandmother. So ये चीज जो है ना, दिस इज व्हाट इज कैरिंग मी टू बी लाइक कैरी ऑन दैट ट्रेडिशन। अभी लोग यहाँ पे कहते हैं कि अरे आप भी आ जाया करें देर से, लोग देर से आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चंद बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपना उसूल जो है ना वो खराब नहीं कर सकता। दिस इज माई, ये मेरा एक उसूल है, ये मेरा एक प्रिंसिपल है कि आई वॉन्ट टू बी पंक्चुअल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी फॉलो द सेम रूल व्हेन आई एम इनवाइटिंग देम टू माई हाउस या किसी और जगह पे। तो इसलिए कि अब होता ये है कि यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा सिस्टम सब बना हुआ है। अगर गोरा बुलाएगा तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, और ये एक बड़ी जो है ना कॉमन सी चीज है। देसी बुलाएगा तो हम फैशनेबली लेट हों। जी जी, वो फैशनेबल लेट, वो एक साहब थे हमारे साथ, वो कैमरून के थे। तो उनसे एक दफा बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी हमें जब कोई बुलाता है तो हम उनसे पूछते हैं कि कैमरून टाइम पे आना है, कैनेडियन टाइम पे आना है। अगर वो कह दे कि कैमरून टाइम पे आना है तो हम 2 घंटे लेट जाते हैं, देखिए वो सब आएंगे। तो ये एक जो है खास तौर पे जो ये इन्वायरमेंट जो है ना, जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में और साउथ एशियन के जो लोग हैं, इनमें ये बहुत कॉमनली आई हैव ऑब्जर्व कि दे आर नॉट पंक्चुअल। अभी कल
जो है वो परसों जुम्मे में जब वो इमाम साहब आए तो वो 15 मिनट लेट आए हैं नमाज पढ़ाने के लिए, तो विच इज से कि देखें हमारे पास जो फ्राइडे इज अ वर्किंग डे एंड पीपल हैव गॉट अ वेरी स्मॉल विंडो Yeah. to come and pray and then go for work. So everybody has to take care of these things. So these are some of the things. But जैसे आपने कहा कि what is keeping me punctual and alive on this is a principle which I have learned from a very young age. ये principle कोई That भी is rule both of you, Dr. Sana and Dr. Aziz, your talks are really good. I really want to address my situation and want to ask both of you a question. I have recently become a mother, and my child is 4 months old, and I'm taking care of the child. And for some reason, me and my husband have planned our baby. And that is the first case in our entire family that somebody is planning a child. So I'm creating the situation before putting up my question. So after this marriage, every single time I visit a family member or went to a party or anything like that, तो उसमें सबसे पहला सवाल ये होता था कि ओ यू लुक पेल, तुम तो प्रेग्नेंट हो गई होगी. And when I actually conceived, तो they'll be like, तुम्हें तो चांद जैसा बेटा हो, अल्लाह करे. And nobody has ever said कि बेटा होना चाहिए, बट वो दुआएं हमेशा यही दी गई कि चांद जैसा बेटा हो और बेटी नहीं हो. Then when the child is born, before the birth, everybody was like कि ये तो हमारे घर का चश्मो चराग होगा and all sort of stuff. But once the human being is actually in this world, they were all so busy, and nobody is literally there to I know कि motherhood किसी को सिखाया नहीं जा सकता, but still to help me out, nobody is actually there. My husband was there, and there were people who were actually questioning that why your husband is there for you, like it is not, ये तो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ ये. So these are actually stressors. फिर वो जो प्रेगनेंसी ब्लूज मेरे साथ थे कॉन्स्टेंटली हार्मोनल शिफ्ट की वजह से, और आई वाजंट एबल टू कोप विद दैट. एंड आप अभी जो ये बता रही हैं डॉक्टर सना टू सेट बाउंड्रीज, इवन देन आई वाजंट एबल टू डू दैट, एंड आई डोंट नो इफ इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू डू दैट. तो क्योंकि आप ना मुझे ये लगता है कि जो हमारे बड़े होते हैं, आई डोंट नो आप मुझसे अग्री करेंगे या नहीं, वो हम लोगों को ये कह के चुप करा देते हैं कि तुम 2 जमातें पढ़ ली हो तो अब हमसे बोलोगी, अब हमें बताओगी. तो मैं सबसे ज्यादा परेशान इस हवाले से ही हूँ कि setting boundaries is quite a difficult task for me, a person like me who जिसका कोई कॉल नहीं हो घर में. No matter if you're earning and you've become a mother and you are a married woman now, you are still छोटा बच्चा, you are still हमारे आगे की पैदा हुई, हमने तुम्हें गोदों में खिलाया है. तो with such people, how can you create boundaries? Farah, can I just simply ask something? You can keep unmuted, okay? देखो, ये चीज मैंने नोटिस भी की है और ये मैं लोगों को सिखाती भी हूँ कि if there is lack of self love, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं और अपने आप से प्यार आपका लोगों को दिख भी नहीं रहा है, कोई दूसरा भी आपसे प्यार नहीं करेगा. हमें अपना ख्याल खुद करना आता है. माँ बनने के बाद हम खाली माँ नहीं है, हमारे स्पाउस पे भी हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे स्पाउस और हमारे बच्चे के अलावा बाकी सब लोग गैर जरूरी है. सो अपने आप की पहली वेलबींग देखना, फिर अपने स्पाउस की वेलबींग देखना और अपने बच्चों की वेलबींग देखना. इट कैन बी इन, यही प्रायोरिटी में यही ट्रायंगल होता है
इसके अलावा जितने लोग हैं वो तमाशबीन हैं। अपने आप से प्यार बढ़ाओ, अपने आप से सेल्फ लव करो। अगर मैं पूछूं इस सब से गुजर रही हो, आर यू टेकिंग थेरेपी और काउंसलिंग और कोचिंग, एनीथिंग एट ऑल? I have a friend actually, Ujala, and my husband. We and another friend of mine. We are a triad sort of thing, and हम लोग जो I've got a text from Ujala also. Okay, तो हम लोग जो हैं we share this thing कि हमें एक जॉली इन्वायरमेंट क्रिएट करना और एक दूसरे का स्ट्रेस रिलीज करना, ये हम लोग करते रहते हैं. और नॉट सच अ थेरेपी बट वी थ्री एक्चुअली, मी, माय हस्बैंड, उजाला एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, we just do that on regular basis, and that's it. And as long as self love is concerned, I literally love myself. I do not take care of myself as much as I should be, but I know I take out time for myself. I love reading, तो मैं उसके लिए time निकाल लेती हूँ, किसी भी तरह थोड़ा सा. Farah, sorry to interrupt you, but we have to move on to our next session. Okay. I'm so sorry. You can ask as many questions you want to Dr. Sana. I will ask her to contact you. You can contact her personally. Thank you. And I have something to say, Ujala. yes, ma'am. Let's arrange a session of Dr. Sana with our all the students of cognitive behavioral therapy Yes, diploma and people who are actually becoming the cognitive behavioral therapist and they are interested. So, Yeah. because I have so many other questions by students, but I cannot ask here. It's a conference going on live. But I yes, want to elaborate that these kind of discussions and talking circles are very necessary, exactly. especially for women. And I am a part. I am a part of neuroscience circle where we all of the neuroscience women from all over the world, we actually have talking circle every 15 days, and we talk about our stories and we talk about from all over the world, you can say. So we talk about us, we talk about our struggles, and we talk about our challenges. So this is very good. And Dr. Sana is actually doing a lot of circles and such virtual setups where we can talk about, where we can learn about, and where we can thrive actually. So thank you, Dr. Sana, and I'll Thank be you. connecting with more people. And I want everyone to listen to Dr. Aziz as well, because we are not going for the panel session because a lot of questions we have taken during this session. So sir can close the whole first Discussion. session of the conference and also comment on certain things. Yes, sir. Thank you so Over. much, Sadaf. I just wanted to actually share something कि हमारे लिए असल में क्या है कि जो चीज़ें इनलाइटनमेंट की होनी चाहिए थी उसको हमने कभी उस पर हम बात नहीं करते और वो हमारी कभी डिस्कशन में आती नहीं. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई थी वो हज़रत खतीजा के साथ हुई थी, ये सबको पता है. लेकिन ये कितने लोगों को पता है या इस पे कभी गौर किया है कि सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हज़रत खतीजा जो है वो 40 इयर्स की थी और प्रॉफिट जो थे वो 25 इयर्स के थे, और जो शादी का पैगाम भेजा था वो हज़रत खतीजा ने भेजा था. और किस कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में भेजा था, अगर आप उस पर गौर करें, जहाँ पे बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था और औरत वाज अ प्रॉपर्टी, वाज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी. तो इस एनवायरनमेंट में जब ये काम हो सकता है तो क्या ये काम आज हो सकता है? आज अगर कोई लड़की जो है वो शादी का पैगाम भेजेगी तो उसको हम बहुत अजीब व गरीब नामों से याद करेंगे. और अगर किसी ने जो है वो बड़ी औरत से, अपनी उम्र की आदमी ने शादी कर ली तो उसके लिए जो अजाब होगा वो एक अलग एक स्टोरी है. तो एनीवे, दिस वाज समथिंग. जब ये खासतौर पर फराह जब बात कर रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि आई वुड से टू फराह कि मैं तुम्हारे साथ कोई सिंपैथी नहीं करूंगा,
I would like you to be the stronger person, as much as you can, because this is how I raise my three daughters. They are educated, they are bold, they are confident, they are very strong, and they can take any challenge which is being thrown in front of them. And that was one of the reason of uh, for their education, was one of the prime reason of moving to Canada. Anyway, this was a great session, and we had some of the very awesome discussion. And I was just thinking that more uh, participants should have come up with some questions or comments. But I understand that because of the lack of time, we won't be able to give enough time to other participants to share their stories or make some comments. But as usual, it's an excellent organization, excellent conference. My thanks goes Thank to, you so much, sir, for your yeah, to Dr. Sadaf, Dr. Shamoon, Ujala, Farah, Yusra, and all those who are part of this excellent team, and they have been organizing these excellent conferences for many years. And thank you so much. And especially organizing a conference on this topic is something which I understand is a mammoth task to even come up with a topic like this, empowering the woman. And I'm giving you the example of one of the most empowered women in the history, Hazrat Khatija. So we have to take some, guidance and enlighten our life uh, from these such incidents and such stories. Thank you so much again. Thank you If, so much, if sir. Farah, you were saying Uh, something. Sorry, uh, Farah was saying something. Sir, she was just thanking you. And with that, we will close our panel session and moving on to our next keynote speaker, Dr. Huzefa Sarfaraz. She is an aspiring sociologist currently working as a specialist humanities at Aga Khan University Examination Board. She is affiliated with Ikra University and has completed MPhil and is a PhD scholar. Huzefa, without delay, I would ask you to please. Ujala, let me correct you. You have Yes. the old introduction of Josefa. Josefa is now Okay. permanent faculty of Ikra University, and she has done her PhD this year and in sociology. And I'm very proud of her. The topic of her presentation and the PhD was actually marital rape, and it was a very crucial topic, and it was actually pressing the issue. But I hope Josefa is talking positively today. I just read her topic as well. So, Josefa had a long journey with all the aspects of education and teaching. So, and she is here with us since the first conference of women empowerment, and the managing editor of our journal of International Journal of Women Empowerment that we actually publish every year. So thank you, Zefa, for joining us once again. And hopefully, as a PhD, this is your first talk in Women Conference. So we are looking forward to it. Thank you. Thank you so much, Huzefa. Good morning time hai abhi bhi in noon, and thank you so much Ujala and Ma'am Sadaf. It is always a pleasure and an opportunity, great opportunity to be here at the International Conference on Women Empowerment. तो AEIRC का काफी पुराना जो है वो ताल्लुक है, and I'm glad that this year also I was able and you guys provided me opportunity to be here. तो आज की बात शुरू करते हैं. Let me share the presentation. I hope it is. Can you see the slides? Yes. Lala, can you please Yes. let me know if it is visible? Yes, it is visible. Thank you. तो बात आज की शुरू करते हैं. बात कुछ नई नहीं है, बात पुरानी ही है, लेकिन बात करना जरूरी है. तो let's talk about the women of yesterday
today कल औरत कल जो थी, औरत आज जो है, और कल आने वाले दिनों में, आने वाले कल में जो औरत होगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जरूरी है, थोड़ा सा देखना जरूरी है दैट हाउ मच वी हैव अचीव्ड एंड हाउ मच एंड हाउ फार वी हैव टू गो। तो बात करें क्यों इसके बारे में, why it is important to talk on this issue of women। औरतों के बारे में बहुत बातें होती हैं, इवन वी हैव फंस लाइक दिस दैट विमेन्स डे मनाया जाता है और मदर्स डे इतने जोश से मनाया जाता है। हम मर्दों की बात नहीं कर रहे, हम मर्दों की बात क्यों नहीं कर रहे? व्हाई वी डू नॉट listen about a conference or any day or any seminar specifically on men? हम men empowerment की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सालाना AEIRC जो है वो women empowerment के लिए ही कॉन्फ्रेंस कर रहा है? इसकी जरूरत क्या है? तो इस जरूरत के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या इफ वी आर डूइंग समथिंग गुड। एक इमेज नजर आ रही है आपको, इस इमेज में यू कैन सी women involved in household activities, house chores, normal regular activities perform कर रही हैं। This image represents quite era, back era। हम देख सकते हैं कि 16th-17th सेंचुरी का टाइम हमें नजर आ रहा है, और तो अपने काम कर रही हैं, दे आर कुकिंग फूड, दे आर रेजिंग चिल्ड्रन, someone in laundry। तो ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, सब अच्छा है 16th till 17th सेंचुरी। जरूरत क्या थी कि हम बात करना शुरू करें औरतों के बारे में? क्योंकि काम तो चल रहा है, सोसाइटीज वर रनिंग वेल, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने की बातें कर रहे थे, हम बहुत कुछ कर रहे थे, दुनिया आगे बढ़ रही थी, रिलीजियस डेवलपमेंट हो रही थी। फिर क्या जरूरत आई या क्या जरूरत थी इस वक्त भी? अगर इस इमेज को देखें, द प्रॉब्लम बैक देन was the perspective. The perspective people had regarding women, they were not considered as human being। उनको इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता था। They were considered as a material, as a property of their family members, specifically the owner of that property, the women property, the owner was male heads, चाहे वो वालिद हैं, चाहे वो शौहर हैं। ऐसा है क्यों? क्योंकि अभी तक women haven't got the legal status of citizen। तो उनके पास इस वक्त तक जो स्टेटस है, वो स्टेटस एक इंसान का नहीं है, एक सिटीजन का नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ women rights movement। I would not use the word feminism till now। हम बात कर रहे हैं women rights से पहले की। तो इस वक्त तक जो है वो औरतों के पास आइडेंटिटी नहीं है। पर्सपेक्टिव देखिए, व्हाट इज पर्सपेक्टिव? इट वी ऑल नो इट वेरी वेल, इट इज अ लेंस थ्रू व्हिच वी व्यू सोसाइटी। तो औरतों को देखने का लेंस जो था, इट वाज quite fragile, it was not a powerful or authoritative। तो इसलिए जो है प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। जरूरत इसलिए थी इस विजन को चेंज करने की कि वो काम कर तो रही हैं, बट दिस ड्यूटी does not involve their choice। वो एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है which they have to do to as an obligation to their masters, their male masters, their brothers, their father and their husbands। तो जब इंसान ही नहीं समझा जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि they had no rights at all।
क्योंकि हम जब औरत को इंसान नहीं समझ रहे थे, तो यानी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो राइट्स भी जो है वो औरतों को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। They were denied from their civil, social, and major political rights, their religious rights. जो दिया जा रहा है वो कबूल किया जा रहा है। तो it was a dire need to make people realize that women are real people. They are real people. They are beings. They breathe. They think. They perform more or less the same duties as men. तो इस जरूरत के तहत जो है विमेन राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड एंड द मूवमेंट अचीव्ड अ लॉट। मैं एक प्रैक्टिस अपनी क्लास में करती हूँ कि व्हेनेवर आई आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप में से फेमिनिस्ट कौन है, तो बड़ा जो है वो एक अजीब सी सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो दे दे लुक एट ईच अदर के भाई हाथ किसने खड़ा किया और किसने नहीं किया। और फिर उसके बाद डरते डरते कुछ लोग जो है वो यूं लड़के स्पेशली ना वो इस तरीके से करते हैं, और हार्डली मेरे ख्याल से वो 10% भी नहीं होता क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है। I've asked this question in the strength of 170. I've asked this question in the strength of 50. And in my last class, I asked this question where there were only 10 students sitting. तो हाथ खड़े नहीं होते। फिर मैं अपना सवाल दोबारा से करती हूँ। मैं करती हूँ कि क्या आपको लगता है कि औरतों को तालीम का हक है, तालीम हासिल करने का हक है? क्या आपको लगता है दैट दे शुड हैव रिप्रोडक्टिव राइट्स? क्या आपको ऐसा लगता है दैट दे शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले देयर पार्ट इन इकोनॉमिक अफेयर्स? और तो कुछ स्टिग्मास अफेक्ट रिलेटेड हैं, अटैच्ड हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू की कि मैं अभी फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ वुमेन राइट्स मूवमेंट की। तो दूसरा एस्पेक्ट इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हम समझते नहीं है या हम जानते नहीं है कि औरतों की आजादी का, औरतों की खुद मुख्तारी का सबकी जो है वो इसमें माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं। ये वो रियलिटी है जिसके बारे में अगर हम लोगों को ना बताएं कि औरतों के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, अगर ये बात शुरू नहीं की जाती तो शायद जो 1831 में women were started to women got the opportunity, they got the right to get admission in higher education, वो नहीं मिलता। अगर बात नहीं होती तो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो औरतों को आज भी नहीं दिए जाते। 1849 में पहली जो है वो यूएस से खातून जो है शी बिकेम द फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट। लेबर राइट्स, ठीक है, देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और देयर पार्टिसिपेशन इन सिविल अफेयर्स, देयर राइट टू वोट, यानी 1920 में जाकर जो है वो औरत को हक दिया जाता है। इस बारे में बात होती है कि शी कैन कास्ट वोट, शी इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी बिफोर 1920 डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम का औरत को हिस्सा नहीं बनाया गया था, तो बात करना जरूरी था। मैटरनिटी राइट्स, आज हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई इस ये औरत मार्च जो है हम इसको नहीं मानते, दिस इज अगेंस्ट आवर आइडियोलॉजी, इट इज propagating the phenomena which can go far, and it is not a good, it will not bring any good to our culture। लेकिन अगर बात करें तो औरत का हक उसके जिस्म पे कि वो बच्चा पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये हक औरत को 1960 से पहले नहीं हासिल था। वो कब बच्चा पैदा करना चाहती है, is she allowed or is she can use contraceptives or by her will, तो इसके बारे में जो है it was a big achievement। then equal pay scale, तो it all
represents the achievements of women rights movement. यानी बात करना जरूरी था, और बात करने से आज आप और हम यहाँ बैठकर जो है वो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. So we should celebrate first of all. It is a time to celebrate. It is a moment to celebrate and cherish that we as a community, as a women community, or as a feminist community, I generally say to my student, if you believe that women are humans and they can enjoy and they should enjoy the human rights, then you are a feminist. तो इस फेमिनिस्ट कम्युनिटी का यहाँ पर जो है वो दे शुड एंजॉय दिस अचीवमेंट के वी हैव कम फार. लेकिन क्या ये काफी है? क्या इतना काफी है? इसके जवाब के लिए थोड़ा सा आई वुड लाइक टू शेड लाइट ऑन ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स हर इंसान को, जिसे हम इंसान समझते हैं या हम अपने आप को इंसान समझते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे पास ये हकूक होने चाहिए. और इन हकूक में जो है वो देयर इज राइट टू लिव, अपनी जिंदगी जीने का हकूक, जिंदगी ऐसी जिसमें गुलामी ना हो, टॉर्चर ना हो. फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन इज आवर राइट. Right to work, that we can work and that work should be decided by us. It should not be pushed. Right to education, हमें पढ़ने का हक दिया जाए इंसान को. अभी हम इंसान की बात कर रहे हैं. ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि जिसको हम इंसान समझते हैं और हम समझते हैं कि बाकी मखलूकात से अलग है, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं, उसके पास ये राइट्स होने चाहिए. अच्छी बात है, मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं. लेकिन अगर कुछ स्टेट्स देखें पाकिस्तान के, तो वो इस तरीके से हमारे सामने आते हैं. I would like all the participants to have a look on this, कि ये हमारे पास जो है वो औरत फाउंडेशन का डाटा है. एंड आपको यहाँ पर जो है वो स्टैट्स नजर आ रहे होंगे 2020. मैं यहाँ पर आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ. आई हैव बिन पार्ट ऑफ जेंडर स्टडीज, और मेरी रिसर्च जो है वो मेनली जेंडर इश्यूज के ऊपर जो है वो होती है. जब भी हम डाटा प्राइमरी सेकेंडरी डाटा की तरफ आते हैं, लिटरेचर रिव्यू की तरफ आते हैं, तो जब भी स्टैट्स की बात होती है, पाकिस्तान में जो है वो डाटा स्टैटिस्टिक्स ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस काफी मुश्किल से मिलता है. हमारे पास अपडेटेड डाटा अवेलेबल नहीं होता. और अगर हमारे पास अपडेटेड डाटा अवेलेबल भी होता है, इफ आई गो फॉर अपडेटेड रिपोर्ट, तो उसमें भी जो है वो मेंशन होगा कि दीज आर जस्ट reported facts, or these are the facts to which our researchers were able to gain. तो limitations है, यानी पाकिस्तान में अभी भी बात नहीं की जा रही. I did my PhD on the topic of marital rape. मेरी स्टडी पाकिस्तान में 2023 में भी ये स्टडी जो है वो पाकिस्तान की पहली प्राइमरी डाटा की स्टडी रही मैरिटल रेप पर. आई हैड एम्पल सेकेंडरी डाटा फ्रॉम इंडिया, सम फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन अगर सब कॉन्टिनेंट के रीजन में देखें तो पाकिस्तान में इवन मैरिटल रेप वर्ड को भी इस्तेमाल करना जो है वो it was not evident for me. Or even in my journey of 7 years, I did not find a paper that clearly took the name of marital rape. हम मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस तक तो कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी बात हम नहीं करते. तो सिचुएशन इन पाकिस्तान इज वेरी डिप्रेसिंग. ये स्टेट्स हमें ये बता रहे हैं कि
जो इंसान होने के हकूक हैं वो काफी जगह नहीं मिल रहे. एंड प्लीज वी शुड keep this in mind, and I think we know that these are just reported cases. इससे बहुत सारे केसेस हैं हमारे रिमोट एरियाज में जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं. तो यही मसला है, बात करने की अभी भी जरूरत है. काफी अचीव कर लिया है और काफी कुछ अचीव करना अभी भी बाकी है. तो पाकिस्तान के हालात अगर हम देखें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो वी स्टैंड at 142 out of 146. The situation is quite depressing, quite upsetting. तो यहाँ पर मैं वापस से अपनी उसी बात को कोट करूंगी कि AEIRC is doing a wonderful job, and organizations like these and the researchers who are talking on this, the writers who are writing on this, the artists who are depicting their message by their art form, ये जरूरी है कि आज भी हम मदर्स डे पर औरतों की बात करें, जरूरी है कि हम डॉटर्स डे मनाएं, जरूरी है विमेंस डे मनाएं, क्योंकि अभी भी काफी आगे का सफर तय करना है. अगर 24 की जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम देखें तो दे हैव प्लान्ड इट एज इंस्पायरिंग इंक्लूजन. एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाए, इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर ऑल द genders are welcomed in an open space communities. लेकिन पाकिस्तान में कैसे किया जाए, हमने पीछे ही देखा कि सिचुएशन इज नॉट क्वाइट वेल. तो द सिचुएशन इज नॉट वेल. We are living, the majority of the Pakistan's population is living under poverty line. Illiteracy है, लोगों को अहमियत का ही नहीं पता. हम अगर कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं तो कितने लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं who are to understand the idea we are talking about. ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते या इसके बारे में समझ सकते हैं. अगर हम यहाँ पर अपने इलिटरेट पॉपुलेशन के पोर्शन को बता दें तो क्या वो समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम जो रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, क्या वो रिसर्च पेपर्स उन तक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे. पुअर गवर्नेंस है, पॉलिसी वीक है, कल्चरल लिमिटेशंस हैं, बात ही नहीं कर सकते. बहुत सारी फैमिलीज के अंदर लिमिटेशंस है, कहीं पर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में लिमिटेशंस है कि बात करना ही मुश्किल है. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि है वो गया, आपने इस पर काम कैसे कर लिया. या एक ने तो मुझसे ये भी पूछा था कि आपका PhD कंप्लीट हो गया है, अभी तक ये पॉसिबल कैसे है कि आपको कोई गोली नहीं लगी. क्योंकि कल्चरल लिमिटेशंस हैं, उन पे बात करना मुश्किल है. क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं. इन सारी सिचुएशंस में कहाँ से होप ढूंढे आगे के लिए? पीछे का सफर तो तय कर लिया, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे मसले हैं. तो there is a model which I've created. It is a model to represent the idea, to provide a solution, to suggest a solution through which we can go towards a more inclusive society. या हम मैक्रो लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, so what we can at least do is work on माइक्रो लेवल. हम खुद से क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्पेसेस में रहते हुए क्या पॉसिबिलिटीज दूसरों के लिए क्रिएट कर सकते हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल इज दैट वी क्रिएट स्पेस फॉर अदर वुमेन. हमारे हमारे इर्द गिर्द जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो बुजुर्ग खवातीन हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है, जिन्हें इंक्लूजन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हम अपने तौर पर उनके लिए जगह क्रिएट करें. चाहे वो हमारी हाउस हेल्पर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं,
हमारे नेबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, वो जिस भी पैरामीटर में दे रिक्वायर हेल्प, वी शुड बी देयर टू क्रिएट एन ओपन स्पेस फॉर देम वेयर दे आर वेलकम, वेयर दे कैन, वो स्पेस कोई वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है, वो स्पेस जो है वो कोई कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो भी उनको जगह, उनको वेलकम करना, उनके लिए जगह बनाना, उनको उनको एक एरिया प्रोवाइड करना वेयर दे फील वेलकम। होगा क्या इससे? इससे कम्युनिकेशन बढ़ेगा, क्योंकि अब वी आर अलाउइंग देम टू बी पार्ट ऑफ आवर स्पेस, हमने अपने इन्वायरमेंट में उनको वेलकम किया है। ना काम नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते, बात सुन सकते हैं, एटलीस्ट बात आगे बढ़ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है। होगा क्या उससे? अवेयरनेस, इट विल लीड टू अवेयरनेस। पता चलेगा कि इशू एग्जिस्ट करता है, मसला है, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो व्हेन आई वाज कलेक्टिंग माय डाटा फॉर माय पीएचडी, तो ऐसे काफी केसेस आए जहां पर पहला सवाल अगर पूछा गया कि डू यू नो अबाउट मैरिटल रेप, दिस पार्टिसिपेंट सेड नो, लेकिन जब उन्हें बताया गया व्हाट इज मैरिटल रेप, तो उन्होंने कहा कि वी नो केसेस जहां पर औरतों के साथ ये हो रहा है, हमारे अपने सिबलिंग्स के साथ ऐसा हुआ है, मगर हमें पता नहीं था कैसे रेप का। तो बात करने से जैसे जो है वो अभी भी बात हुई थी कि अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ सोसाइटल अवेयरनेस भी जरूरी है कि होता रहा है। कम्युनिकेशन होगा, स्पेस प्रोवाइड होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, क्योंकि आपने उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड की है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज, रिगार्डिंग इनर स्ट्रेंथ्स, so it can lead to financial independence in their own specific area or zone. होगा क्या जब औरतों के पास या किसी के भी पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है? इट विल लीड टू इंक्रीज डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस, वो भी अपना गवर्नेंस में पार्ट प्ले कर सकती हैं। हमारे पास जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो मेल मेंबर्स के पास क्यों होती है? बिकॉज दे आर द वन हु आर arranging the bread for us, they are the one who are earning. तो जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तो यानी डिसीजन मेकिंग पावर भी उसके साथ औरतों के पास आएगी, जिससे बढ़ेगी औरतों की पार्टिसिपेशन इन इन वेरियस अरेनाज, जहां जहां उन्हें पॉसिबिलिटी मिलेगी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। जैसे अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हमारी है, इस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेशन का एक जो रीजन है वो हमारी बिकॉज वी आर प्रोवाइडेड स्पेस, because we are independent, because we are taking our decisions, that is why we chose to be here. मैं यहाँ पर अगर एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो बिकॉज आई हैव द पावर टू टेक this decision for myself, and I'm taking this decision because of my financial independence. पार्टिसिपेशन है यहाँ पर हम सेलिब्रेट किया इससे पहले भी। डॉक्टर सदफ अहमद इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि जब जगह मिल रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो दे आर मेकिंग देयर फैमिलीज, देयर कंट्री, देयर कम्युनिटी प्राउड। तो हिम्मत आती है अपने साथ दूसरों को भी आगे लेकर जाने की, और फिर हम इससे पढ़ाते हैं एडवोकेसी, आगे बात करना, मैसेज को आगे बढ़ाना। एक स्नोबॉल इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है, जिससे क्योंकि अब जब बात हो रही है, जब एडवोकेसी हो रही है, देन वी आर ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप्स, वी आर ऑन अ वे टू ब्रेक द साइकिल and creating more resilience in society, which will ultimately leads towards an inclusive society, a society where women are welcome as men are. So I know I have taken much of a time. I will just conclude it now that the perfect moment to start is now. We What we can do is
just play our part at our individual level, micro level, अपने घरों में देखें, अपने ऑफिसेज में देखें, पब्लिक स्पेसेस में देखें, अपने लेजर एक्टिविटीज में देखें, क्या आप किसी के लिए कोई स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप उसे अपने एनवायरनमेंट, अपने बबल का पार्ट बना सकते हैं. तो वी जस्ट हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ, just from right now. So at this point, I will say thank you for listening, and I will just say all the best to all the women and women working towards the vision of women empowerment. Thank you so much. Thank you so much, Josefa. And as you emphasize on the evolvement of women over the time and the historical milestone that have shaped that trajectory of the woman progress, I have a question related to one of the issue that you have raised, that is marital rape. Is there any legal framework available, or does it exist in Pakistan related to marital rape? Okay, I guess Josefa has disconnected with us. So yes, Josefa, can you hear me? Yes, I can. Yes, my question was related to the topic that you have touched in your PowerPoint, that is marital rape. My question is that does any legal framework exist in Pakistan related to marital rape, or any kind of law is there? Unfortunately, we have laws related to sexual violence, but it does not entertain when the women is in marriage. जब बात आती है मैरिटल रेप की, तो वहां पर जो है वो वी हैव नो लॉ. अगर हम अपने रेप के जो क्लॉजेस को भी देखें, आर्टिकल को भी देखें, तो दे क्लियरली entitled that if the sexual assault has been done by the person who is married to the person assaulted, then it will not be considered as a rape. So, हम marital rape पे we have no legal system which can work on it. Okay, and Fiza, one of our participants, is asking that what initiatives have been successful in addressing gender-based violence, and how can they be replicated? Josefa, can you hear me? Yes, I can hear you now. Any other Yes. question? Yes, there is one question from our participant, Fiza. She is asking that what initiative have been successful in addressing gender-based violence, and how can they be replicated? Hello. Hello. Ujala, can you please write and can you please throw the question on chat? It will be more, I guess, easy for me. Sure. I have sent it in the chat box. Did you see it? Okay, what initiatives? ठीक है. Successful in gender-based violence, and how can they be replicated? Okay, if you are asking that what actions or initiatives have been taken in the other societies, because I am assuming that if because this is not a reality in Pakistan, so masla limitations. There are ample ways. There are massive approaches that have been
used by many societies. Even India is talking about it. Bangladesh has working on it. They have started taking the word marital rape. तो मसला क्या आ जाता है पाकिस्तान में that our values are are fabricated, our weak value system, and the role of our formal, religious, and educational social institutions. देखिए सबसे पहला काम जो इदारों का होता है वो होता है सोशलाइजेशन का और institutions provide us the information, the means that are required, that are considered normal in society ना हमारे लिए जो acceptable है या हमारे लिए जो normal है वो हमारे ये इदारे बताते हैं हमारी फैमिली बताती है हमारा स्कूल हमें बताता है हमारे religious institutions हमें बताते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है देखें जब हम रिसर्चर्स इस पर काम करना शुरू करते हैं तो हम इसकी जरूरत बताते हैं कि केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड एंड देयर इज अ नीड दैट आर इंस्टीट्यूशंस आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एट लीस्ट शुड टॉक ऑन दिस इशू क्योंकि हमारी एज ए सोसाइटी कुछ लिमिटेशंस हैं कि we have a set of certain persona जहाँ हम इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो उस इंफॉर्मेशन का उसी स्पेसिफिक जोन से आना जरूरी है हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन इदारों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट गोइंग अगेंस्ट the values, the beliefs, we can talk on these topics while referring towards the idea of human rights. एक औरत को इंसान समझते हुए चाहे वो किसी बेगम है उनको भी जो है वो उनके फिजिकल उनके सेक्सुअल राइट्स जो हैं उनके सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा सकता है तो हमारे पाकिस्तान के सिनेरियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकते हैं दोनों Thank you so much, Zephyr, and thank you so much for your time. And with that, we will move on to our next session, documentary showcase by Ms. Ajab Shabir from Habib University. She will showcase her work on Al Zahra Academy. Ajab? Hello, hi. Hello. Do you want, you can kindly introduce and then I will share your documentary. Sure. I just wanted to say that while I was in my, like during my college days, I used to work with Al Zora. Like I used to go there and teach their children. So why, so the reason why I was inspired to make this short documentary on Al Zora was because the owner of Al Zora, Miss Nikat Zera Shah, basically she has this perspective of empowering females who should stand on their own feet by giving them vocational training if they're interested in cooking, doing makeup, like providing makeup or parlor services, learning computer and doing any jobs related to that. She has she has a school and a vocational training center over there where teachers are teaching not only young students and fostering them but also teaching females who have a very limited amount of education and who cannot afford education, but like she knows them and she wants them to she wants to empower them. So she basically like asks them to come to a vocational training center, and for very less amount of money she teaches them all these the gives them workshops with of whatever they are interested in. And I think this was something that was very inspiring to me. And it is not a very fancy place, but it is what she has and she does a great job. So this was
something I wanted to tell about her, and I think my documentary will show more about it. मरना नहीं चाहती कि मैं जाहिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस निखत ज़ारा शाह है और मैं इस वक्त प्रेजेंटली अलज़ोरा वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, बट आई जॉइंड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर इन 1995 and then I worked my way up. Al-Zohra was founded by our beloved Zohra Begum. It was registered in 1991, and we started working from Al-Zohra from this area only. This is our place of work in Punjab colony. It was registered here. I joined in 1995, but Al-Zohra has been around since 1991. Zohra Begum gave us some specific ideology. We have to follow. We like to follow that, and we try to come up to her standards. At that time in 1991, there were very few NGOs for women, or very few organizations that were working specifically for women. As far as I can remember, there was just Behbood and Apwa. So she specifically said that we should work for women, and especially for those, and try to help those women, especially those women जो कि ना मांगती हैं, ना they get out of the homes. We should try to support them and bring them out and make them stand on their feet. We have 3 major projects going on and a few smaller ones. 2 of the 3 major projects are to do with education and women empowerment. That is, we have a vocational training center that has been going around since 1998. We started with just one training in sewing, and then it started expanding. At the moment, we are giving trainings in 6 different fields. That is, we have 3 different good computer courses. Then we have basic and advanced English language course. We have cooking courses, basic and advanced beautician courses. We have 5 different sewing courses. We have a fitness class, a gym, aerobics, and yoga daily. These are from morning till evening. These trainings are held. They cater to mostly underprivileged women, or we just try to make it accessible. Our courses are all registered. The vocational training courses are all registered with STEVTA. STEVTA is Sindh Technical Education and Vocational Training Authority. Our courses tend to be giving more on hand skills, so that the girls, when they go out, they finish a course, they can go out and demonstrate that they are able to work on the computer. They have good English language skills. And the beautician courses, they don't even finish. It's only for a short course for 2 months. It's not even finished, then the girls start getting jobs. So they are doing well, mashallah. And then the other education based activity is our school. The vocational training is only for females, but our school is co-education. We had started with a free tuition center, and we had run a free tuition center for 6-7 years, and then there was a lot of pressure from the parents who said that our children learn to read and write only from here. And it was difficult because all the kids were coming from different schools, and there was not a set syllabus, and there was just for 2 hours, and it was then they were requesting us to open a school, so we did, and we tried to make it only for the girls. But again, there was this pressure and request from the parents that the atmosphere in the school and our focus on just not on education, but their character building and ethics, and they would be very much grateful that if we allow boys also. So our school is co-education. The other innovation is that we are using Rosetta Stone interactive language software
for English, which is being used in our English language course for our vocational training center. This we find is of great help for our students because they don't come from such a background that they are proficient in English, and because we are using O-level compatible curriculum, like we are using Science Vector, we are using Real English, we are using keyboard computing. Now that when Al-Zora was started, Zora Begum started Al-Zora by giving out ration to the needy women, and the ration was given out of the Zakat fund. So our third major activity is based on our Zakat fund. And let me be clear about this, that our Zakat fund is only used for giving out rations to Zakat eligible women, or giving out marriage pack. Like we don't give out cash, we have a marriage pack. We have it has contents about 20,000 rupees at value, and this we give out to the needy girls who are getting married. 2 points are our major focus: gain and implement knowledge with the fear of Allah, and transform citizens into assets of society. उस ज़माने में एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ बच्चियों का था कि जी वो नौकरी के लिए करके उनको सऊदी अरेबिया ले गया कोई बंदा, और काफ़ी 10-15 के ग्रुप में ले गया। तो बाद में पता चला कि वो जो उन्होंने साइन किया था वो कोई वीज़ा टाइप करनी था, वो निकाह नामे पे साइन किया था, और फिर वहाँ जाके उनकी बहुत अब्यूज़ हो रही थी। तो शी वाज सेइंग कि इतनी तो लिटरेसी और इतनी समझ बच्चियों में और लड़कियों में होनी चाहिए कि वो दुआई पढ़ सके, मैंने बच्चे को ये दुआई देनी है, समझ सकें। और जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी ना कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, एंड इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। Ajab, indeed, it was a very good documentary. How do you find Al-Zora School different from other co-educational institute of our society? I mean, the thing is that all the school is not very fancy, as I mentioned earlier as well, right? Yes. But their main aim is to empower females, and they are doing that. I mean, other schools must be doing that as well, but I think we have schools that are taking a lot of money at this point and giving education, but Zora's like all of their funding is coming from other people, and their main aim is to empower. And that is what they're doing throughout the year. People are coming there every single day. Like when I was even making my documentary, the females were lined up over there for multiple reasons, and they were coming and talking to Miss Nigat Zera Shah. She's also giving meals to these school children, and the work is ongoing. And it's not only about giving this education into the four walls of Al-Zora. I've seen her organize multiple events throughout the year and bringing in people who are more educated to Punjab colony, and making these people meet with them and giving them an interaction, and also giving them a worldly experience of how to talk, how to do things with them. So I think I was really inspired by what she was doing. Thank you so much, Ajab, for sharing your experience with us. And moving on to a much needed topic to be discussed, and that is deconstructing gender narratives, exploring toxic masculinity, misogyny, and abuse in South Asia cinema. This is a review that is furnished by Ms. Farah Batul, lecturer, Department of Psychology, Malir University of Science and Technology. Ms. Farah, I will just share your PowerPoint.
Can you see it? Yes, I can. Okay. Ujala, it's a request if you can make it like full screen. I have. Yes, thank you. So, yes, as Ujala has said, South Asian cinema exploring, masculinity, misogyny, and abuse. It is actually a much needed topic that we all should be learning and we all should be talking about. And what better platform than this conference to talk about this and to have a great discussion. Um, can I have the next slide? Okay, so as far as the South Asian cinema is concerned, it has long been a mirror reflecting social norms and cultural paradigms. However, within this real world, a disconcerting narrative often unfolds, one that perpetuates toxic masculinity, misogyny, and the normalization of abuse. इतना common हो गया है ये that we are actually fantasizing these things and we are actually, young girls and young boys are fascinating and उसकी एक fantasy और fancy बन गई है उस हीरो जैसा दिखना है उस हीरोइन जैसा करना है वो मजलूम थी उसने कितना बर्दाश्त किया एंड नॉट ओनली दैट as we have spent a lot of time in subcontinent तो उस सब कॉन्टिनेंट पर रहने की वजह से हमारे अंदर ये चीज इनबिल्ट हो गई है एंड ओनली इन दिस रीजन द सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि खवातीन जो है वो उनको एक चीज कंसिडर किया जाता है रादर देन अ ह्यूमन बीइंग और यही चीज पोर्ट्रे होती है और आगे हम इस प्रेजेंटेशन में ये अनफोल्ड करेंगे कि हाउ दिस एक्चुअली अफेक्ट्स कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड yeah so before moving forward we need to know what is toxic masculinity is वो मर्दानगी की पिक्चर जो हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं एक्चुअली वो है क्या हमने समझ लिया है कि जो मैनलीनेस है ना वो अगर आप दो चार लोगों को मारें गरेबान चाक करके फिरें आप उनको देखें एंड आई एम सॉरी but manlyhood is basically and nothing more than that although male and manliness is way beyond that. If we talk about misogyny, so misogyny is the hatred towards women or prejudice against women or girls. We have many, and you'll see. मैं इस चीज को सेव करना चाह रही हूँ फॉर द स्लाइड्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे. एक चीज जो बहुत कॉमनली आप लोगों ने डायलॉग बहुत सुना होगा आमिर खान का डायलॉग लड़की बस इसकी तरह होती है एक आती है तो दूसरी व्हाट काइंड ऑफ डायलॉग and how can you objectify a human being like that relating to narrative हमारे इतने नॉर्मल हो गए हैं कि अब हमें इन चीजों से मसाइल नहीं होते अब हमें उन कैरेक्टर्स से हमदर्दी होती है वो बेचारा वो हम इस वायलेंस इस टॉक्सिक Due to connectivity issue. Yes, Farah, are you there? Okay.
Yes, I am. Am I Yes. audible? Yes, you are Sorry audible. for You the can. issue. Okay. Okay. So we are so normal in that sense कि अब हमें ये सारी चीजें जो है ना questionable नहीं लगती हैं, ये सारी चीजें हमें जो है वो triggering नहीं लगती हैं. Can I have next slide? Ujala, can I have the next? Farah, I have you are having connectivity issue. If you Am could I close audible? your, yes, you are audible. I have moved to the next slide of Kabir Singh. If you could close your video and just talk, I guess that will help. Okay. Okay, so talking about that, Kabir Singh, as take one example for that, Kabir Singh is one of the movies that actually, you know, is a thought-provoking movie. उसमें इतना toxic हमने वो border lines जो थी ना love और possessiveness में वो खत्म कर दी हैं. और उन border lines को खत्म करने का मतलब ये हुआ है अब हमारे दरमियान के वो जितना भी abusive partner हो जितना भी possessive और टॉक्सिक रिलेशनशिप हो हम उसे प्यार कंसिडर करके उसी के अंदर रहते हैं उसी के अंदर करते हैं और दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग. कबीर सिंह में दिखाया गया कि एक शख्स जो अपनी लवर को या अपने पार्टनर को अब्यूज करता है फिजिकली इमोशनली टॉर्चर करता है वो ड्रग एडिक्ट है एंड उसको हीरो बना दिया गया उसको पोर्ट्रे किया गया ना सिर्फ पोर्ट्रे किया गया बल्कि यूथ ने उसे परसीव भी किया. तो दिस इज समथिंग this sort of portrayal of relationship should not be portrayed by any means and consent should be there. Can I have the next slide? हाँ, let's talk about the talk of the town. मेरे पास तुम हो. We have another, you know, जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया गया इस ड्रामा में खवातीन को खुसूसन उस खातून को आई शुड नॉट यू नो पुट वर्ड्स ऑन दैट बट जिस तरह से उस खातून की स्ट्रगल को जो सोसाइटल नॉर्म के खिलाफ थी उसको कम किया गया बी लिटिल हर वर्ड shedding light on the complexities of relationship and gender dynamics. अगर ये सब हीरो करता तो ये होता कि जरूर औरत में कोई कमी रह गई होगी वरना तो ऐसा कुछ नहीं होता. तो लेकिन ये एक औरत ने किया मतलब आई एम नॉट जस्टिफाइंग the loyalty here. I'm just making a point that objectification of gender has become so common and this is become normal in our environment. Can I have the next slide? Then we have animal, lick my shoe. And everyone was in awe with that. The moment the trailer of Animal was released, even I must include myself, were in awe. A person, a male, covered in blood, have a dagger in his hand, and that actually fascinates me. And I got scared because you know if I consider such man as men, so what am I going to raise my son to be? So ये जो toxic manhood है, we should put a stop to that. Can I have the next slide?
Ujala, can I have the next slide? Thank you. अच्छा, अगर आप यहाँ पे कुछ डायलॉग्स देखें, these are very interesting. हम सबकी फेवरेट मूवी कुछ कुछ होता है, उसका डायलॉग जो इतना डिस्ट्रेसिंग है, अव्वल तो अब जब मैं एनालाइज करती हूँ तो वो पूरी मूवी ही मुझे डिस्ट्रेसिंग लगती है, लेकिन लड़की वो होती है जो जिससे माँ के पास ले जाया जा सके। आप किस तरह से वो, ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हम कुकी कटर बना रहे हैं, और अगर वो लड़की जो है उस कुकी कटर से पास हो रही है, मतलब उसमें फिट हो रही है, तो वो लड़की है। अगर वो उससे आउटग्रो कर गई है तो वी डू नॉट कंसिडर हर एज अ वुमन, अ डिग्निफाइड वुमन। अनदर वन इज मूंगफलियों में छिलके और लड़कियों में नखरे ना होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। वन मोर, तुम एक पत्नी हो, तुम्हारा पति जैसे चाहेगा वैसे ही होगा, ये शादी का दस्तूर है, मर्द औरत का भगवान होता है। अगर खूबसूरत लड़की को ना छेड़ो तो वो भी तो उसकी बेइज्जती होती है। वो मेरी बंदी है, कबीर सिंह। अच्छा, अगर खूबसूरत लड़की को ना छेड़ो तो वो भी तो उसकी बेइज्जती होती है, ये 1988 का है। अभी हुजैफा ने एक टॉक दी, वुमेन टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। हम कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं, मुझे लग रहा है आगे भी हम वहीं होंगे। हम लड़कियों को उसी तरह ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। चश्मे बदूर 2013 का डायलॉग है, व्हेन यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। दिस इज सो इजी, वी आर ऑब्जेक्ट। हमें जो है वो इसी तरह सिनेमा में पोर्ट्रे किया जा रहा है, एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? Oh, we have none other than Danish with us, and the famous dialogue, "To टके की लड़की." How can you put a word to a lady that you love? This is the question that many should ask, and many have raised their voices. But this is what we are doing. खवातीन ने इसको बहुत दिल खोल कर देखा, मर्द हजरात ने देखा, everyone was gathered together and they enjoyed the show regardless of the toxicity that it is spreading. Can I have the next slide? हाँ, ये जितने भी शोज हैं और ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स जो हमें सिनेमा में मिलती हैं, उनका रनिंग टाइम जो है वो जुपिटर की रोटेशन पीरियड से भी एक्सीड कर चुका है। सन का मास एज कंपेयर टू अर्थ is lesser than the amount of followers these shows have, and distance between earth and the moon is way smaller than the prices and the earning of these shows and films are on box office. So this is what you have actually. This is the reality, and you cannot put 100 करोड़ तो अब ऐसी मूवीज एक दिन में कमा लेती हैं। 100 करोड़ कहना और करना is a task. Big numbers catch your audience's attention. Obviously, आप दिखा रहे हैं 4000 शहरों में एक साथ, 4000 सिनेमा में एक साथ रिलीज हो रही है, और उसके 6 लाख टिकट्स बिक चुके हैं। अब तक उसके 200 करोड़ कमाई हो चुकी है। सारी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, एंड दे जस्ट बाय अनदर टिकट, और उसकी जो वो हाइप है वो बढ़नी शुरू हुई और मूवी ने बिजनेस कर लिया। Once it is commercially successful, nobody cares about what kind of messages it is given to the society. Can I have the next slide? An idea that can make or break is our mobile phone. Not only that, कि ये लोग हमारे बिग स्क्रीन्स पर छा गए हैं या हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर आ गए हैं, बल्कि ये लोग हमारे फोन पर हैं। They are actually capturing our youth's mind. चाहे वो शॉर्ट्स की फॉर्म में हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, अब रील्स बनती हैं उन्हीं डायलॉग्स के ऊपर जो बार 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 हम सुनते हैं। एंड दिस इज ह्यूमन नेचर एंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, कि आप अगर एक ही बात बार बार सुनेंगे तो फिर आप जो है वो
उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे और वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी. Can I have the next slide? Instead of using this huge medium to be the voice of societal culture, negativities, and prejudices, we are using it as a medium to promote such things. And this should not be done. Can I have the next slide? Ideas of change, ऐसा नहीं है कि हमारे पास उम्मीद नहीं है. There are many films nowadays and many dramas that are being portrayed. लेकिन क्या उनका नंबर उस तरह से है जिस तरह से वो टॉक्सिक मूवीज और ड्रामास का नंबर था? एक्सपोनेंशियल कमाई की है उन लोगों ने. पिंक 2016 में एक बॉलीवुड कोर्टरूम ड्रामा that addresses societal attitudes toward women and consent, और इतनी शानदार मूवी थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा उसने कमाई नहीं की. दिल ना उम्मीद तो नहीं, ये पाकिस्तानी ड्रामा है और मुझे यकीन है कि बहुत सारी ऑडियंस को तो नाम भी अब पता चला होगा जब ये इस स्लाइड में सुनेंगे. इसमें सेक्स ट्रैफिकिंग के हवाले से बात हुई, इसमें अब्यूज, सोसाइटल इनजस्टिसेस के हवाले से, जेंडर इनक्वालिटीज के बारे में बात हुई. बट वी हैवंट पुट आवर थिंग ऑन दैट. उडारी, इट्स अ फेमस ड्रामा, और इसमें भी चाइल्ड अब्यूज और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को टॉपिक बनाया गया था और बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे किया गया. सोसाइटी में चेंज आया और ऑन कॉन्ट्ररी इट्स अ हिट ड्रामा. थप्पड़ 2020 की मूवी, जिसमें बताया गया कि इवन इफ यू आर इन अ मैरिज or a permanent bond, sort of, that is assumed in our culture, a physical abuse should not be allowed, even if it is one thappad or many. So take on home message is कि हम उसे पहली उसमें रोक दें. That is more interesting. Nip the evil in the bud instead of waiting and making it a huge trail. और इस बात का, क्योंकि जब वो मॉन्स्टर क्रिएट हो जाएगा ना हमारे घरों में, हमारे सोसाइटीज में, तो उसको रोकना मुश्किल है. अभी हम रोक सकते हैं कि हम उस मॉन्स्टर को बनाएं ही नहीं. वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट. वी हैव टू, एंड वी आल्सो हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट that cinema and movies and dramas and television and YouTube is just for an entertainment purpose. And if we realize that, we should not be implying such things to our lives. Thank you, and this is it from my side. Thank you, Farah. Indeed, this was a much needed talk in today's world. And now moving on to our last session. So far, we are now heading toward the end of this conference, and what better way to this than hearing some success tales that are not yet heard. We have Ms. Gulzar Fatima. She is currently leading the administrative department at Habib Girls School. She is also a personal management expert as well as HES expert with around 32 years of experience. Ms. Gulzar, welcome, and we are all ears for you. Thank you. Assalamu alaikum, Ujala. How are you? Walaikum assalam. I'm fine. Thank you, Ms. Gulzar, for your time, and you can take the floor. अच्छा बेटा, एक्चुअली मैं टॉकेटिव तो बहुत हूँ और मेरा काम सारा जो है वो बोलने का ही है, लेकिन इस टाइप की कन्वर्सेशन मेरी उस पर ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हो रही है. और चूँकि मेरी एज तकरीबन 55 साल है और अपने पिछले 32 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मेरे जो वाहिद हैंडीकैप है वो यही है कि मैं डिजिटली इतनी इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ.
तो समटाइम्स जो है वो मुझे बच्चे हेल्प करते हैं और ऑफिस में स्टाफ जो है वो सपोर्ट देता है। तो अगर कोई इस किस्म की चीज़ हो जिसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं अच्छी तरह सुनी जा रही हूँ? जी मैम, आप सुनी जा रही हैं। आप प्लीज अपनी स्टोरी सुनाएं। अच्छा, बस स्टोरी तो ये चूंकि वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैंने अपनी फैमिली में शायद हम कुछ रखी हैं कि अपनी फैमिली में हमेशा एम्पावरमेंट ही देखी है खवातीन की। हमें कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कभी हमें किसी किस्म की तरजीही बुनियादों पर हमें कमी और उसकी सामना हो कि भाई हमें प्रिविलेजेस नहीं है, और चाहे वो खाना हो, चाहे पढ़ना हो या पहनना हो, जितना भी था जैसा भी था, हमारे यहाँ इक्वलिटी थी। हमारे घर में भी जब अपने माँ बाप के घर थे और जब शादी होकर अपने घर पे आए तब भी हमेशा यही देखा। लेकिन ये कि आप सक्सेस स्टोरी इस तरीके से कह सकते हैं कि फाइनेंशियली जो एक सपोर्ट देनी थी उसके लिए मैंने अपनी एजुकेशन के दौरान ही, यानी इंटरमीडिएट के बाद ही मैंने जॉब शुरू कर दी। तो बाकी एजुकेशन जो है मेरी ग्रेजुएशन फिर लॉ, वो मैंने अपनी जॉब के दौरान किया। इसलिए कि मेरी जॉब जो है वो ये नहीं कह सकते आपके बहुत सोच के और वो चूज की गई थी, वो एक अवेलेबल जॉब थी जिसे मैंने ऑप्ट किया और फिर अपनी आगे की एजुकेशन उसके हवाले से ही मैंने कंटिन्यू की। तो चूंकि लेबर एडमिनिस्ट्रेशन का काम था तो लॉ करना ज़रूरी समझा तो लॉ कर लिया। इसके अलावा ये कि बाय द टाइम जो है वो मेरा चूंकि अपना शायद जहन था, कुछ बिल्ट इन वो थे मामलात के, आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हवाले से मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर भी होते रहे और मैंने बहुत उसको दिल से किया, कभी ये समझ के नहीं किया कि ये ज़रूरत है आपके पोर्टफोलियो के लिए और प्रोफाइल हाई करने के लिए, बल्कि ये मेरी अपनी हमेशा कोशिश रही। और अब मेरी इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अगर किसी जगह पे भी जाती हूँ तो सबसे पहले वो एनवायरनमेंट में चेक करती हूँ कि वहाँ पे सेफ्टी और उसके हवाले से क्या इकदाम लिए जाने चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है वगैरह। तो ये समझ लो कि ये 1987 से शुरू हुआ मेरा प्रोफेशनल जो जर्नी है। और ताहाल मैं एक स्कूल है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ, पहले फैक्ट्री थी। तो जो आपके पास अपने दिल से जो मैंने एक चीज़ नोटिस की वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं नहीं समझती कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का कोई हवाला है, बल्कि ये समझा जाए कि ये कॉमन पर्सन जो है उसकी जो हुकूक हैं यानी राइट्स उसके उसके हवाले से मैं ज़्यादा अवेयर हुई। और फिर मैंने समझा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस तरफ काम करूं। इसलिए कि हमारे पास जो हम अपने बिल्कुल डायरेक्टली जो मेरे मातहत काम करने वाला जो स्टाफ है वो सारा लेबोरियस जॉब्स हैं, टेक्निकल जॉब्स हैं। उनके यहाँ मैं देखती हूँ कि इस एजुकेशन की कमी है कि वो अम, अपने हुकूक से वाकिफ नहीं है। उनके मिनिमम वेज, उनके जो औकात कार के मामलात हैं कि उनको टाइम से ज़्यादा जो है वो काम लिया जाता है और उनको मुआवजा वैसे नहीं दिया जाता जैसे देना चाहिए। तो अब मेरा, मैं समझती हूँ कि फोकस सारा इस तरफ है कि मैं इन चीज़ों पे काम करूँ, इसलिए कि हमारे अपने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे मेरे ख्याल में वर्ल्ड में जो इस किस्म के राइट्स हैं उनमें बहुत फुकदान है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर वो किसी जगह पर काम कर रहे हैं, कोई वर्क प्लेस है, तो उनके अपने एक तो जो कहना चाहिए आप समझ लीजिए एक मासी को और
इसके अलावा जब उनके लॉन्ग आवर्स होते हैं तो उसमें उनसे कभी ये तवक्को नहीं की जाती कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। इवन हमारे पास मिनिमम वेज भी जो है वो नहीं दिया जाता। और फिर उसी हिसाब से जब उनके कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट होती है जिसमें उनका लाइफ इंश्योरेंस है, उनके जो है पेंशन के मामला हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका सोशल सिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों पर मतलब कोई काम नहीं है। बल्कि जानबूझ के वो लोग जो इसके बारे में जानते भी हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इस पे मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते। और मैंने बाय द टाइम ये देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये सिचुएशन है। और मैं ये समझती हूँ कि अब इस हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने की जरूरत है कि हम माजरत के साथ में जितनी चैरिटी पाकिस्तान में होती है उन इदारों से भी मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। उनमें भी जो है वो स्टाफ को ये कहते हैं कि ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आपको सैलरी जो है वो उस हिसाब से कम दी जाएगी। और लेकिन जो जितने सीनियर पोजीशंस पे लोग हैं वो बहुत बिगर अमाउंट्स पे काम करते हो। तो मैं ये मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। अगर आप ओके जी अब सही है सही है। जी। इसमें मैं पर्सनली ये देख रही हूँ कि हमारे पास इस वक्त जेंडर से ज़्यादा मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी इस बात पर कि हमारे यहाँ लोगों के जो राइट्स हैं उनको जिस सतह पर भी मुमकिन है लोग समझते हैं कि इसको कट करके जो है वो अपना कुछ बना लिया जाए मामला। और मैं मेरी जो पिछली जॉब थी वो चूँकि एक फैक्ट्री थी और अभी जो जॉब है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर अपने तौर पे तो मैंने सारे मामला चूँकि मेरे हाथ में हैं तो मैंने दुरुस्त किए हैं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब आप दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक जो वो प्रोसीड करते हैं वो चीज़ें, तो वहाँ पर बहुत ही दिक्कतें और लेट काम करने की जो रिवायत है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ है जो मैं अब फील कर रही हूँ इस उस पे आके कि मुझे इस पे बहुत सूरत के साथ में काम करना है। और जाहिर है कि एक आम इंसान की जितनी भी लाइफ होती है और जितनी उसकी हेल्थ उसको इजाज़त देती है कि वो कब तक काम करेगा। मैं पर्सनली समझती हूँ कि कामयाबी मतलब अगर ये सक्सेस स्टोरी के तौर पे मैं वो करूँ तो अपने बच्चों में मैंने बहरहाल ये चीज़ मुंतकिल कर दी है। और कि वो लोग जो है वो इन सारी चीज़ों से आगाह हैं और वो प्रिपेयर हैं अब अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन सब चीज़ों से के अगेंस्ट काम करने के लिए। अगेंस्ट से मुराद ये नहीं है कि उसके खिलाफ उठ खड़े हों, बल्कि वो लोग काम करें और काम इस तरीके से करें कि नीड बेस्ड जो डेटा है वो प्रिपेयर हो और उसके हवाले से चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाएं। इसलिए कि हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता। आप चाहे जिस इदारे में स्टाफ काम कर रहा होता है वहाँ पर भी उनकी जो पर्सनल फाइल है उसकी कोई मतलब ऐसी अहमियत नहीं होती। अलावा इसके एप्लीकेशन लिखी हुई हों। और जो उनकी पर्सनल मैनेजमेंट है वो इसके अलावा कि उनके खिलाफ नोटिस हो कोई और उसके लिए टर्मिनेशन के वो मामला किए जाएँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते इवन मैं इतना इस बारे में मैं माजरत के साथ में किसी को भी इससे वो नहीं करता। सॉरी आपको दोबारा काट रही हूँ मैम। डिस्टॉर्शन दोबारा हो रही है इस वजह से। ओके, ये अब सही है? अब सही है? हाँ अब सही है, अब बेहतर सही है। है। तो हमारे पास ये होता था कि यानी एक सर्टेन टाइम के बाद जो कॉन्सेप्ट होता है कि किसी की पर्सनल फाइल जो वो कितने अरसे तक रखी जा सकती है, इसका ही कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं था। हेलो, सुन रही हो उजाला? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी मैम जी सुन रहे हैं आपको। तो इसमें मैंने ये तक देखा कि मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे कुछ जला दिया जाता है या रिकॉर्ड डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उसमें पर्सनल रिकॉर्ड भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। और जिस वक्त
किसी स्टाफ की पेंशन के और उसके रिटायरमेंट के मामला आते थे, उस वक्त उसकी फाइल ही नहीं मिलती थी कहीं पर। तो मैं इन सब चीज़ों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डेटा कलेक्शन हो, किसी भी इंसान की, किसी भी इंसान के काम की डॉक्यूमेंटेशन हो कंप्लीट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरे हवाले से ये कि मेरी 14 इयर्स की जो जर्नी थी वो तो एक इंडस्ट्री में रही, और शादी मेरी हुई है 98 में। 99 में जब मेरी पहली बेटी हुई तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, इसलिए कि उसकी जो लॉन्ग आवर्स से वहाँ पे कोई डे केयर नहीं था, और मुझे जो है वो मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि मैं बच्ची को अपनी इस तरह कहीं छोड़ूं। तो मैंने जॉब जो है वो उस वक्त मौकूफ़ कर दी अपनी, और तकरीबन 7 इयर्स तक मैंने जॉब नहीं की। उस दौरान जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, उसके लिए हमने अपने घर पे छोटे छोटे काम किए, केटरिंग भी की, और जो है वो टक शॉप शुरू की, पॉट प्लांट्स का काम किया, बहुत कुछ किया उस दौरान में 7 इयर्स में। और फिर जब बेटा मेरा जो है वो 2.5 साल का हो गया और उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होने लगी, तो मैंने दोबारा से जॉब शुरू की अपनी। तो लकीली ये कि ये इस स्कूल में जो है वो जॉब मेरी शुरू हुई सेकंड, लेकिन मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क था वो सेम था तकरीबन। सिर्फ ये हुआ कि यहाँ पर स्क्रैच से काम करना शुरू करना पड़ा, इसलिए कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम्स पे काम नहीं हो रहा था, जो कि मतलब हमारे अपने जॉब के हवाले से बहुत ज़रूरी होते हैं। परचेज एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, और आपका सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से सिस्टम्स हैं। पॉलिसीज़ बनी हुई नहीं थी, और जो है वो प्रोसीजर्स डेवलप करने पड़े बहुत सारे। तो ओवर द 18 इयर्स काफ़ी चीज़ें शुक्र है कि बेहतर हुई हैं, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इनमें डेफिनेटली। अब मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि सिस्टम्स इन प्लेस होने के बाद जो है वो ज़रूरत नहीं रहती कि बार बार चीज़ों में रद्दबदल की जाए। अलावा इसके सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ अपने एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने रिटायरमेंट से पहले सक्सेसर को रेडी करना है, इसी पैशन के साथ, इसी पेशेंस के साथ, और इसी जोश के साथ में, कि वो मतलब जोश से मुराद ये नहीं है, इसलिए कि आपके पास जो है वो टाइम बहरहाल लिमिटेड है। दुनिया अब ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, ज़ाहिर है हम डेटा ज़्यादा बेहतर तौर पे कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा उससे काम कर सकते हैं, सूरत से, मतलब आपके लिए अब काम करना कंपैरेटिवली आसान है। हमने हाथ से काम किया, लिख के काम किया, अब जो है वो बच्चे माशाल्लाह फटाफट उसको जो है वो रेडी करते हैं, डेटा को फीड करते हैं, और उस डेटा को आप फिर अपने तौर पे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए ये होता था कि हम हर शीट को अलग तैयार करते थे। अब आप एक डेटा को जैसे कमांड देते हैं, उस तरीक़े से आपका लिस्ट तैयार होकर निकल आती हैं। हमारे पास जैसे पर्सनल जो डेटा है किसी स्टाफ का, उसमें उसका नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी। अब ये डेटा फिर ये कि शादी अगर हो गई है तो फैमिली जो है वो अ, उसमें कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, उनकी एज क्या है। अब ये डेटा जिस जिस तरीके से डेवलप होता रहता है एक एम्प्लॉय का, एक स्टाफ का, उसको हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, अपने ईओबीआई के डेटा में, हमारे पास प्रोविडेंट फंड है, इन सब चीज़ों में हम अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं डेटा को। तो मेरी सक्सेस जो है वो समझ लो यही है, मैं पर्सनली समझती हूँ कि अभी सक्सेस हुई नहीं है। सक्सेस जब होगी जब सक्सेसर तैयार हो जाएगा। इन्हीं तमाम डिटेल्स को आगे लेके चलना, और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके एक बेहतर जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके किसी भी इदारे में।
बहुत शुक्रिया मिस गुलजार अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और इंडीड आपकी अपनी स्ट्रगल रही होंगी और आपके अपने एफर्ट्स बहुत लगे होंगे सब कामों में। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। You are most welcome. You are most welcome. Okay, थैंक यू beta. सो मच। एंड विद दैट इस साल हम लोग we will end our 8th International Conference of Women Empowerment. Thank you everyone for being with us, for taking out time, for sharing your stories of success, of struggle, and we will again try our best to do and open the platform for all the women next year also, and we will continue. AIRC will continue to do that. Thank you so much and see you all.